I am Garvit Pandey. I am your computer teacher. In the previous classes, we have studied with the help of Zoom app, but there are some disadvantages of Zoom app that are the high consumption of data and confidentiality of data. So that at this time we use Google Meet app for the online class. Now we have covered three chapters of computer. Now start with chapter 4, which is computer networking. Now first term, what is networking? Networking क्या है? The process of creating networks is called networking. जो नेटवर्क को क्रिएट करने की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं. So second term, what is network? Now what is the term network? What is network? The interconnection of nodes that are connected to each other, that is called network. The interconnection of nodes that are connected to each other, that is called network. Now move to the next topic, which is uses of network. What are the uses of network? Network is used for many purposes, such like if you want to send a data to another person, network is used. Network reduces our time. And so next, move to the network terminology. What are the terminology that are used in the topic in the chapter network? So the terms that are used in the network are called server, client and NIU. Server, client is also called workstation, and NIU for network interface unit. Now start with server. Server, what is server? Server is a main computer. Server is a main computer which responds according to the query or according to the question of the client. जो क्लाइंट की क्वेरी होती है, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स होती है, वो हम लोग टाइप करते हैं एंड सर्वर्स प्रोवाइड द रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेरी ऑफ द वर्क स्टेशन. नाउ व्हाट आर द क्लाइंट, व्हाट आर द वर्क स्टेशन? Clients are also known as workstation. The nodes, the computers are called client or workstation. If we want to search any query from the net, so we have to enter our query, and then that query is transferred to the server, and server responds on the basis of your query. Now what is NIU? Server and client are. Now what is NIU? NIU is the establishing connection between server and client is called NIU. सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए इंटरफेस यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहते हैं NIU. नाउ अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क. नेटवर्क के हमारे क्या टाइप होते हैं? नेटवर्क हमारा 3 टाइप का होता है. नेटवर्क इज ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज लोकल एरिया नेटवर्क, in short LAN. Second one is metropolitan area network, in short MAN. Third one is wide area network, in short WAN. In the local area network, the network is established through wire. Means all the nodes are connected through wire. So this network is established under a room or under a building. तो एक बिल्डिंग या एक रूम के अंदर जो हमारा नेटवर्क स्टैब्लिश होता है, वो बाय यूजिंग लैन के थ्रू हम लोग नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं. द प्लेसेस वेयर इट इज यूज्ड इन इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. द नेटवर्किंग ओवर अ सिटी इज कॉल्ड मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. जो नेटवर्किंग है जो स्प्रेड आउट हुई है किसी भी सिटी के अंदर, उसको क्या कहेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. व्हाट इज वैन? वैन क्या है? द वैन इज अ ग्लोबल नेटवर्क. ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड आउट है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल नेटवर्क. वैन इज कॉल्ड ग्लोबल नेटवर्क. ऐसा नेटवर्क जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, उसको क्या कहते हैं? वैन कहते हैं, ग्लोबल एरिया नेटवर्क कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज इंटरनेट. Now the things are what components of network. Move करते हैं further topic क्या है? Component of network. There are 2 component of network. First one is hardware component. Second one is software component. First one is hardware component. Second one is software component. कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होते हैं नेटवर्किंग में और कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यूज होते हैं?
As like hardware component, the requirement is client और nodes की requirement होगी, computer की requirement होगी, that are hardwares. Next, hardware component, shared resource. What is shared resource? शेयर रिसोर्स क्या है? ऐसा रिसोर्स जो among all node, among all computers जो रिसोर्स शेयर होता है उसको क्या कहते हैं? शेयर रिसोर्स. For example, in a lab there are 10 computers and there only one printer, and each computer can be print from that printer. So that printer is a shared resource among all the 10 nodes. Now next is software component. In the software component there are 2 points. First one is protocol. What is protocol? Protocol होते हैं set of rules जो जिनके थ्रू हम कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, वो क्या होता है? प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स. और सेकंड क्या है? नेटवर्क सॉफ्टवेयर. सेकंड इज व्हाट? नेटवर्क सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राउटिंग ऑफ द डाटा. डाटा की राउटिंग के लिए, डाटा हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो हमारा कैसे ट्रांसफर होगा? एक डाटा को ट्रांसफर करने के लिए कई सारे रूट होते हैं, तो डाटा किस रूट को फॉलो करेगा, कौन से रूट को फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड डाटा राउटिंग. एंड सेकंड थिंग इज एरर डिटेक्शन. इफ एनी एरर फाइंड during the sending time of, during the transmission time of the packet, so that is checked by using error detection. एरर डिटेक्शन के थ्रू हम चेक कर लेंगे कि डाटा में क्या मेरा डाटा कुछ लॉस हुआ या फिर डाटा में मेरे कोई प्रॉब्लम आई है या फिर मेरा डाटा बिल्कुल करेक्ट है. आगे फर्दर मूव करते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क. फर्स्ट वन इज क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क. सेकंड वन इज पीयर टू पीयर नेटवर्क. फर्स्ट वन इज व्हाट? क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क. सेकंड वन इज पीयर टू पीयर नेटवर्क. Now consider it client to server network. In this type of network, there is a server and all the nodes in the client server network, there is a server and all the nodes are connected to this server. These nodes are also called workstation. So the workstation request for the query and server response on the basis of the query of the client or workstation. This system is called, this network is called client server network, and the network in which all the nodes are connected with each other. There is no any server in our network. That network is called peer-to-peer network. So now in the peer-to-peer network, each node is connected to all other nodes. So total connection lines are used n into n minus 1 upon 2. Total connection lines are used n into n minus 1 upon 2. And in the client server network, if there are total n nodes, so the connection lines are used n. The connection lines are equal to the number of nodes in the client server network. But in the peer-to-peer network, all the nodes are interconnected with other nodes. So the connection lines that are used are n into n minus 1 upon 2. Now move to the next topic, which is topology of network. Now next topic is topology of network.
What is the topology of network? Topology, the interconnection of nodes using wired network is called network topology. Interconnection of node using wired is called network topology. The network topology is of three types: bus topology, star topology, and ring topology. Let's consider one by one bus topology. In the bus topology, all the nodes are connected with a single line. In the bus topology, all the nodes are connected with this single network line. So, if any node want to send the data to the other node, this node send the data to the network line, and the node which is requesting for the information, that receives the information from the network line. So what are the disadvantages of this system? Data is not confidential. Data confidential नहीं रह पाता, means अगर इस नोड को डाटा वर्क स्टेशन means if the workstation 1 wants to send the data to workstation 5, then it cannot send the data to the directly to node 5. It is transmitted by this medium network channel. So this is the main disadvantage of this channel. Now next is the star topology. In the star topology, all the nodes are connected to the server and form a structure like star. In the star topology, all the nodes are connected with a server, and this structure looks like a star. So this topology is called star topology. In this topology, if any node wants to send the data to the other node, then it firstly sends the data to the server. Then first server sends the data to that node which is requesting for the information. What is the advantage of this network? The advantage of this network is data is safe in the server, and any node can send the data to another node without hesitation, because server is reliable. सर्वर रिलायबल होता है, सर्वर पर विश्वास किया जा सकता है कि वो हमारे डाटा को सेफ रखेगा. Now, what are the disadvantage? The main disadvantage are if server fails. If server fails, then whole system crash. If अगर सर्वर फेल हो जाता है, वर्क नहीं कर पाता, तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है. Now next is ring topology. In the ring topology, networks are connected with a network is connected with its preceded node and its succeeded node. अपने पीछे वाले अपने आगे वाले नोड से एक नोड कनेक्टेड रहता है, and it forms structure like a ring. That's why this topology is called ring topology. Now in this topology, the advantage is if any connection line break, then we can send the data through another connection. This is our main advantage. And that disadvantage is that if any node fails, then one-sided connection will be lost. Then connection will be of single side. Now, next thing is, what are the communication channels? There are 4 types of communication channels.
first one is twisted pairs, second one is coaxial cable, third one is fiber optics cable, fourth one is wireless link. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर द कम्युनिकेशन चैनल्स. तो क्या होता है कम्युनिकेशन चैनल, क्या होते हैं ऐसे मीडियम जिनके थ्रू हम नोट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट आर कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल्स. फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर. इन दिस टाइप ऑफ interconnection the wires are twisted. Wires are twisted with each other. आपस में ट्विस्टेड होते हैं, आपस में क्या होते हैं ट्विस्टेड होते हैं. मेन एडवांटेज क्या है, दे आर चीपर. चीप होते हैं, सस्ते होते हैं. और डिसएडवांटेज क्या है, दे कैन नॉट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कैरी नहीं कर सकते हैं. सेकंड थिंग इज कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल आपने देखोगे दैट कोएक्सियल केबल्स आर यूज्ड इन द केबल टीवी और डिश टीवी. केबल टीवी डिश टीवी में यूज होती हैं. थर्ड थिंग इज फाइबर ऑप्टिक्स केबल. फाइबर ऑप्टिक्स केबल आर कॉस्टलियर देन कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल, बट these cables work faster than twisted pair or coaxial cable. Fourth thing is wireless link. The channel in which there is no physical interaction between nodes but they are communicated. That link is called wireless link. In this type of link, the interconnection, the networking is done by using radio signals. Okay, thank you.